Hello, my dear students. This time I am going to discuss with you the structure and functions of neuron, an important topic, and often you may get a full question in the examination regarding this structure and function of the neuron. So let us start. First, we will discuss something about the nerve or nerve trunk. This is the nerve, a nerve trunk, and it is surrounded by the membrane that is known as the epineurium. This nerve has so many fascicles or bundles, and these bundles our fascicles are surrounded by a membrane that is known as the perineurium. And now this bundle contains so many nerve fibers or neurons, and each nerve fiber is surrounded by a membrane that is endoneurium. And this is nerve fiber with myelin sheath and axon, etc. So many parts we'll discuss. Now, if you cut a section here like this, you will get this the nerve, and this is the surrounding membrane epineurium. Now, this nerve has so many bundles or fascicles, and this is surrounded by membrane that is the perineurium, and in the bundle there are nerve fibers, lot of nerve fibers, and this nerve fiber, one nerve fiber is surrounded by this endoneurium. So we'll discuss the nerve fiber and neuron now in detail. So first we'll discuss number of neurons in the human brain. The central nervous system, which includes both brain and spinal cord, contains approximately 86.1 billions neurons in human being. The vast majority is in the brain, which contains about 86 billion neurons. Out of 86.1, 86 billion neurons are in the brain. The cerebral cortex, which is a part of the brain, contains 16 billion neurons. And the cerebellum, another part of brain, contains approximately 69 billion neurons. These neurons form about 100 trillion connections with each other. So you can imagine how much complex this structure is there. Nerve fibers and connections and brain and spinal cord. But the exact number of neurons is difficult to determine precisely and is a subject ongoing research. Now we'll discuss the structure of a neuron. तीन पार्ट हैं स्ट्रक्चर न्यूरॉन के. वन इज द नर्व सेल बॉडी और द सोमा, देन डेंड्राइट्स, एंड देन एक्सिस सिलेंडर, एंड लास्टली देयर टर्मिनल बटन्स. Soma, yeah, in nerve cell body there is a nucleus with nucleolus, one or two nucleolus. There are mitochondria, Golgi apparatus, and there are also Nissil granules and neurofibrils and other parts of the cell, usual cell. Then there are the dendrites, this one. Then a part axon hillock, from where the axis cylinder axon arises. This is the initial segment of axon जहाँ पे मालिन शीत नहीं होती है. And then there is axis cylinder or axon. Axis cylinder और axon के चारों तरफ ये एक एक्सोलिमा मेम्ब्रेन है. एंड देन देयर इज अ मालिन शीथ, और दिस इज अ श्वान सेल. और मालिन शीथ के बाद में जो मेम्ब्रेन दैट इज न्यूरोलिमा, शीथ ऑफ श्वान. तो ये इनिशियल सेगमेंट है. ये एक इंटरनोड कहलाता है, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस, बीच बीच में नोड ऑफ रेनबियर से डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मालिन शीथ. तो ये एक स्ट्रक्चर है. तो विल डिस्कस in detail. Neuron and nerve cell is defined as the structure and function unit of nervous system. Neuron is similar to any other cell in the body, having nucleus and all the organelles in the cytoplasm. Neurons are different from other cells by these ways. Number one, neuron has branches of processes called axon dendrites. ये axons और dendrites, these are the characteristic of only neuron, और किसी सेल में नहीं मिलेंगे. Number two, neuron does not have a centrosome, so it cannot undergo division. And number three, neuron has Nissil granules and neurofibrils यहाँ पर. These are the characteristic features. ये एक मिक्स नर्व है. एक्सॉन इन द बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स ऑफ ए मिक्स पेरिफेरल नर्व ट्रंक. मिक्स नर्व में ये सेंसरी नर्व है, ये मोटर नर्व. ये रिसेप्टर्स आर सेंसरी एंडिंग्स, एंड देयर इज एक्सॉन, एक्सोलिमा, मालिन शीथ एंड न्यूरिलिमा. ये एक्सिस सिलेंडर हो गया. तो ये द सेंसरी नर्व. और यहाँ से एक और नर्व निकल रही है, ये मोटर नर्व है, जिसका मोटर एंडिंग जो है यहाँ पर ग्लैंड्स हो सकती हैं, स्केटर मसल या स्मूथ मसल्स हो सकती हैं. तो दिस इज मोटर एंडिंग. और ये एक दोनों एक शीत में लगती हैं, शीत चारों तरफ से होती है. दैट्स व्हाई इट इज ए मिक्स नर्व. बाकी ये नर्व है, नर्व ट्रंक, और ये फेसिकल्स हैं. ये डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग ब्लड वेसल्स से. तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स नर्व, बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व देयर. नाउ something about the nerve cell body or soma. Nerve cell body is also the soma or perikaryon. It is irregular in the shape, this one.
Like any other cell, it is constituted by mass of cytoplasm called the neuroplasm. यहाँ पे ये पूरा neuroplasm है, which is covered by the cell membrane. The cytoplasm contains a large centrally situated nucleus. This one with one or two prominent nucleoli ये यहाँ पर हैं. Nissel bodies, these are nissel bodies, nissel granules. Neurofibrils भी हैं. Mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. Nissel bodies and neurofibrils are found only in the nerve cell and not in other cells. और यहाँ पर ये एग्जाम हो रहा है तो नर्व सेल बॉडी के बारे में बात हो गई. नाउ कम टू द निसिल ग्रेन्यूल्स. दीज आर निसिल ग्रेन्यूल्स. दीज आर नेम्ड आफ्टर फ्रांज निसिल, a noted neurophysiologist who invented Nissel staining method. He is the Franz Nissel, 1860 to 1990. These are the angular granules present in scattered form throughout the cytoplasm of soma and in dendrites, but not in the axon. It is also not present in the axon hillock. ये axon hillock है, यहाँ पर ये Nissel granules नहीं होते और ना ही axon में होते हैं. Axon hillock from which the axon or axis cylinder arises. No Nissel granules in the axon. तो CFC dendrites में है और soma में है. The main function of Nissel bodies is synthesis of protein due to presence of ribosomes for intracellular use. These proteins are transported to axon by axonal flow. यहाँ पर बनती हैं और उसके बाद ये प्रोटीन आगे axonal flow through axon में flow करती है. These disappear following the injury to the nerve cell, loss of damage to processes, loss of function of neuron, circulatory disturbance, hyperpyrexia, high fever, poisons, fatigue. इन कंडीशंस में ये नेचुरल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. दिस प्रोसेस नॉन द क्रोमेटोलिसिस. लेकिन जब रीजनरेशन होता है दे अपीयर. व्हेन द नर्व सेल रीजनरेट्स दीस ग्रेन्यूल्स रीअपियर. तो नेचुरल ग्रेन्यूल्स के बारे में हो गया. नाउ कम टू न्यूरोफाइब्रिल्स. ये नेचुरल ग्रेन्यूल्स है. दे आर सुपरफिशियल रेटिकुलम गोल्गी. दीज आर न्यूरोफाइब्रिल्स. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट की तरफ, और यहाँ पर डेंड्राइट से निकलकर ये सोमा में भी हैं और सोमा के बाद में एक्सिस सिलेंडर में भी. तो न्यूरोफाइब्रिल्स, दीज आर द न्यूरोफाइब्रिल्स and axon, soma, and dendrites. Neurofibrils are thread-like structures present in the form of network in the soma and the nerve processes, dendrites and axons. Presence of neurofibrils is another characteristic feature of the neurons. The neurofibrils consist of microfilaments and microtubules. Now come to the Golgi apparatus, which is present in the soma. Similar to that of other cells, concerned with processing and packing of the proteins into granules. Now, regarding the mitochondria present in the soma, it is also present in the nerve cell body and in axon. Like in other cells, this also acts here as powerhouse of the nerve cell where ATP is produced. Now come to the dendrites. These are the dendrites. The dendrites are 5 to 7 processes extending out from the cell body. They are receptive process of neuron and transmit impulses to the nerve cell body. यहाँ से ये receive करते हैं और nerve cell body को impulses transmit करते हैं. These impulses can be transmitted from one dendrite to another dendrite in the central nervous system. So this is about dendrites. Now come to the axon. ये axon है. This is axon hillock, then initial segment, and then medullary. This is the myelin sheath, internode, and nodes of Ranvier, and terminal buttocks. Axon is the longer process of nerve cell. Each neuron has only one axon. Dendrites से बहुत 5 से 7 हो सकते हैं, but axon is one. Axon arises from the axon hillock of the nerve cell body. It has no Nissel granules. After that, this initial segment of the axon जहाँ पर myelin sheath नहीं है. उसके बाद में यहाँ पर myelin sheath, myelinated nerve fibers myelin sheath होती है. Axon extends for a long distance away from the nerve cell body. Axon transmits impulses away from the nerve cell body. यहाँ से फिर impulse को transmit करता है. Then myelin sheath, ये myelin sheath है, myelinated nerve fiber है, ये श्वान सेल है. और यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, माइलिन शीथ नहीं है, तो यहाँ पर खाली एक्सोलिमा है और एक्सॉन है, और फिर न्यूरोलिमा है. यहाँ पर ये एक्सॉन है, एक्सोलिमा है, और ये माइलिन शीथ है, देन न्यूरोलिमा है. तो माइलिन शीथ इज ए थिक लाइपोप्रोटीन शीथ दैट इंसुलेट्स द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. माइलिन शीथ इज नॉट ए कंटिन्यूअस शीथ, बीच बीच में गैप हो रहे हैं. इट इज एब्सेंट एट द रेगुलर इंटरवल्स, एंड द एरिया वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. दिस वन सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. ये दो नोड्स के बीच में इंटरनोड है, और यहाँ पे श्वान सेल है. माइलिन शीथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर ऑफ द नर्व फाइबर्स, और श्वान सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ. नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन. ये स्ट्रक्चर हो गया. नाउ फंक्शंस ऑफ नर्व सेल बॉडी. फर्स्ट, दिस वन, it maintains the functional and anatomical integrity of the axon. Materials responsible to maintain integrity of axon, mostly proteins called neurotropins, are formed in the endoplasmic reticulum of cell body. The proteins associated with synaptic transmitters, जो यहाँ पर synaptic transmitters निकलते हैं, are also synthesized in the endoplasmic reticulum.
Now function of the dendrites, these one. These are the receptive processes of neuron that is transmits the impulses towards the cell body. यहाँ से transmit कर रहे हैं. Here non-conducted local potential changes generated by synaptic connections are integrated. Now come to the functions of axon. Axon hillock ये, and this is the initial segment axon. These are the sites where propagated action potentials are generated. उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं. An axonal process transmits the impulses away from cell body to the nerve endings. यहाँ पर ये impulses transmit कर रहे हैं to the nerve endings. Now come to the functions of synaptic knobs. यहाँ पर nerve endings where action potential causes the release of synaptic neurotransmitter. Then functions of myelin sheath. This one. Faster conduction. Number one. Myelin sheath is responsible for faster conduction of impulse through the nerve fibers. जो nerve impulse है वो यहाँ से jump करके चलती है. नोड ऑफ एम्पियर, फिर नोड ऑफ एम्पियर, फिर अगले नोड ऑफ एम्पियर, तो बहुत फास्ट कंडक्शन होता है. In myelinated nerve fiber, the impulse jump from one node of Ranvier to another node, and this is called saltatory conduction. Sometimes there may be short note or MCQ about the saltatory conduction. एंड सेकंड जो इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट इंसुलेटिंग कैपेसिटी है. यहाँ पर एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर के बीच में इम्पल्स जल्दी जाती नहीं, एक्साइट नहीं होती, क्योंकि ये माइलिन शीथ है. तो इट हैज इंसुलेटिंग कैपेसिटी. माइलिन शीथ हैज हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी एज इट रेस्ट्रिक्ट्स द नर्व इम्पल्स विद इन द सिंगल नर्व फाइबर्स. एक ही नर्व फाइबर में इम्पल्स जा रही है, दूसरे में नहीं जा पाएगी. एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर्स. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ. ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, फास्टर कंडक्शन एंड insulating capacity. Now functions of neurulima, this one, ये न्यूरोलीमा है और यहाँ पर न्यूरोलीमा है. इसका फंक्शन इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यहाँ पर the neurolima serves as a covering membrane only. In myelinated nerve fibers, this one, neurolima is necessary for formation of myelin sheath or myelinogenesis. While in central nervous system, neurolima is absent. Hence, their myelinogenesis occurs by oligodendroglia, which is a type of neuroglial cells. तो यहाँ पर almost structural functions of all the parts of a nerve fiber neuron has been discussed. सेकंड वीडियो में हम और आगे कुछ क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर्स, कुछ डिजनरेशन की बात करेंगे. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस. और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कामयाब होइए. थैंक यू वेरी मच.